हेलो एवरीवन, वेलकम। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी के इन किसी भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीडीएस, सीएपीएफ, सीआईएसएफ, एनडीए या पीसीएस एग्जाम्स। क्योंकि यूपीएससी एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारे एग्जाम्स करा रही है और लगभग सबका सिलेबस भी सिमिलर है काइंड ऑफ। तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं क्वेश्चंस या टॉपिक्स या सिमिलर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको इन सभी क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में रिपीट होती हुई दिखेगी। किसी भी टेस्ट सीरीज को करने से पहले हमेशा बेहतर रहता है कि आप एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी देंगे कहाँ पर आपको अपने सोर्सेज में कुछ और इंक्लूड करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं जो आपके सोर्सेज से बाहर पूछी जा रही हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is not a right guaranteed by Article 19 of the Constitution of India? ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। Article 19 6 टाइप ऑफ फ्रीडम्स देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, फ्रीडम टू मीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी आउट एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। सो हमारे ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दिस इज करेक्ट। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, करेक्ट। फ्रीडम टू फॉलो अ रिलीजन ऑफ वंस चॉइस, दिस फ्रीडम इज नॉट गिवन बाय आर्टिकल 19। ये फ्रीडम हमें फ्रीडम ऑफ कंसाइंस अंडर रिलीजियस प्रैक्टिसेस मिलती है, ये इनकरेक्ट है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन, दिस इज करेक्ट। सो सी इज योर आंसर। नेक्स्ट, which one of the following statements with regard to the right to freedom of religion in India is not correct? This right gives all persons freedom of conscience. Article 25 में given है, this is correct. It does not permit educational institutes maintained entirely by state funds to impart religious instructions. We have seen this. This is also correct. It is under Article 28. It prevents the state from making a law providing from social welfare and reform. ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है, सो दिस इज इनकरेक्ट। द रेफरेंस टू हिंदू इंक्लूड्स सिक्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो सी इज योर आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मैं आपको पहले भी बताया है कि आर्टिकल 21 का स्कोप सबसे बड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंदर इम्प्लिसिटली बहुत सारी चीज़ें अपने डिफरेंट केसेस के अंदर ऐड की हैं। वो सब चीज़ें क्या हैं हम वन बाय वन देखेंगे। राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू एनवायरनमेंट, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट ऑफ द प्रिजनर्स, राइट टू लीगल एड, राइट टू क्रूअल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट, राइट नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू बॉन्डेड लेबर, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग एंड राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। सो ऑल दीज थिंग्स comes under the ambit of Article 21, and this has evolved with different judgments of Supreme Court. So, see our options. Medical aid to injured by doctor, this is under Article 21. We have seen sexual harassment of women at workplace, this is also under Article 21. Pollution of the quality of water, this is also under Article 21. Capital punishment, this is not under Article 21, and D is your answer. Next, right to education was added to the fundamental rights in the Constitution of India through the 86th Amendment Act. Very factual question. Next, which of the following are constitutional provisions and laws for the protection of rights of the scheduled castes in India? Article 17, yes. Abolition of untouchability, protection of civil rights, Act 1955, yes. Scheduled castes and scheduled tribes, prevention of atrocities, Act 1989. This is also correct. And 1, 2 and 3, C is your answer. Next, which of the following fundamental rights are enshrined in the Constitution of India belong only to the citizens? Only to the citizens. Article 19, protection of right to freedom of speech, yes, correct. Article 21, protection of life and personal liberty, ये हम citizens and non-citizens दोनों को देते हैं, so this is incorrect. Article 15, prohibition of discrimination,
This is only to the citizens of India. Article 16, equality of opportunity is provided only to the citizens of India. So 1, 3 and 4. 1, 3 and 4. C is your answer. Next. Right to form associations and union is right guaranteed to everybody? No. To freedom guaranteed only to the citizens of India. Yes, this is correct. So B is your answer. Next. Which one of the following statement is not correct with respect to Article 32 of Constitution of India? It provides remedies to citizens for the enforcement of fundamental rights. Yes, 5 types की writs होती है जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है. It is a part of fundamental right. Yes, Article 12 से लेकर Article 35 तक जो भी rights है that are fundamental rights. So Article 32 is also a fundamental right. The Supreme Court cannot refuse a writ petition under Article 32 on the ground of delay. Yes, this is also correct. Protection under Article 32 also applies to enforcement of ordinary law, which has nothing to do with the fundamental rights. No, this is not correct. If any law is an ordinary law, तो Supreme Court उसके enactment के लिए writs issue नहीं करता है. Ordinary या legal laws के लिए जो writs issue करता है वो होता है High Court under Article 226. So C is your D is your answer. Next. In India, who is competent to amend fundamental rights? Lok Sabha, Rajya Sabha or Parliament? So the answer is Parliament, but only if it does not violate basic structure of Constitution. Parliament can amend any fundamental right unless it is violating basic structure of the Constitution of India. Next, citizens of India do not have which one of the following rights? Right to reside and settle in any part of India. This right we have under Article 19. Right to acquire, hold and dispose of property. This was a right under Article 19, but it was removed and was placed under Article 300A as legal right and not a fundamental right. Right to practice any profession? Yes. Right to form cooperative societies? Yes. So B is your answer. Next. In which of the following cases did Supreme Court rule that constitutional amendments were also laws under Article 13 of the Constitution of India, which could be declared void for being inconsistent with fundamental rights? Let's see all the cases. Keshav Nanda Bharti case. Keshav Nanda Bharti case gave the doctrine of basic structure, so this is not correct. Golaknath case, yes, it ruled that Parliament could not curtail any fundamental right, and the constitutional amendments are also laws under Article 13. Mary River Mills case, it gave a doctrine of balance between fundamental right and directive principle that said Parliament can amend any fundamental right for implementing directive principles of state policy. Menka Gandhi case, here Supreme Court said that fundamental right to life does not merely mean breathing but also living with dignity. So B is your answer. Next. Which of the following is not true of Article 32 of the Indian Constitution? It gives Supreme Court and High Court the power to issue writs for the enforcement of fundamental rights. No. It gives only Supreme Court the power to issue writs, and High Court get its power from Article 226. It is included in Part 3 of the Constitution of India and is therefore itself a fundamental right. Correct. Dr. Ambedkar called it very soul of the Indian Constitution. Correct. An aggrieved person has no right to complain under Article 32 where a fundamental right has not been violated. Yes, this is also correct. So A is your answer. Next. Which of the following fundamental rights are available to non-citizens? Equality before law. Yes, equality before law हम सबको देते हैं, कोई बाहर से आए या हमारा खुद का citizen हो. This is correct. Right against discrimination. Discrimination तो होगा अगर आप हमारे citizen नहीं है. This is not correct. Equality of opportunity. Equality of opportunity is given only to the citizens of India. So this is also incorrect. Protection of life and personal liberty. It is given to every person. So article option A and 4 are correct. 1 and 4 only is your answer. कौन से फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए हैं और कौन सी फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स को भी दिए गए हैं, ये आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा. और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसका एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको इसका एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूँगी. नेक्स्ट. द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट अवेलेबल टू एन एनिमी एलियन, अ पर्सन डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, अ फॉरेनर और एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. तो एनिमी एलियन को ये राइट अवेलेबल नहीं है, पर्सन डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव लॉ को भी ये राइट नहीं है. Foreigner has this right and an overseas citizen of India has this right. What is Article 22? Right to be informed
of the grounds of arrest, right to consult and be defended by a legal practitioner, right to be produced before magistrate within 24 hours, right to be released after 24 hours unless the magistrate authorizes further detention. There are two types of detention. One is punitive and other is preventive. Punitive detention is to punish for the offense committed after trial, but preventive is detention without trial. इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए. आप एम लक्ष्मीकांत से इसके बारे में पढ़ सकते हैं. Next, freedom of conscience under the Constitution of India is subject to, first of all, let's see what is freedom of conscience. Freedom of conscience is inner freedom of an individual to mold his relation with God or creatures in whatever way he desires. Freedom of conscience is subjected to public order, morality and health. State is permitted to regulate, restrict any economic, financial, political or any other secular activity associated with the religious practice. And state can provide for social welfare and reform or throw open Hindu religious institutions of public character to all the class and sections of Hindus. Let's see all the options. Public order, morality and health. This is correct. A law providing for social welfare and reform. This is also correct. Opening Hindu religious institutions of public character to all Hindus. Correct. Defamation or incitement of an offense. We have not seen this. So this is incorrect. 1, 2 and 3 only is your answer. 1, 2 and 3. B is your answer. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.